Hi everyone, welcome back to channel Simple Concepts. I am Rashmita and this is another lecture on the topic jurisdiction and powers of Supreme Court. So in our previous video of Supreme Court, we have talked about what is the vacancy in Supreme Court, how are the appointment of judges is done, how the impeachment process is done, what is included in the impeachment process, and everything about the basic knowledge of the advocates or the judges in Supreme Court. But this lecture specially focuses on jurisdiction and powers of Supreme Court, like what all powers does the Supreme Court has, and under which power what are the role that Supreme Court plays. Okay, so we will be covering each and every jurisdiction and power of Supreme Court under this lecture. So before coming to the lecture, here is this Unacademy UPSC Championship 2.0. It is an all India free mock test series for UPSC CSE Prelims 2020 and 21 Paper 1 GS. So if you perform well in this test series, then you can win a chance to meet UPSC CSE 2019 toppers, top Unacademy educators and Unacademy subscription scholarship. So this is going to held on 30th of August, 6th of September, 13th of September, 20th of September and 27th of September. So you can enroll for it right now. The link for the enrollment is provided in the description box. You can just click on it and get yourself enrolled for this mock test series. As you all know, there are very few days left for your UPSC exam of 2020. You can start preparing with Unacademy right now by subscribing for Unacademy. So here are the benefits that you get on your one subscription. Okay, so let me define each and every privilege or the benefit that you will be getting after subscribing to Unacademy. So the first is that you can learn live from the comfort of your home. You don't have to face any traffic or go out anywhere. You can just sit at your home at a place wherever you are comfortable, and then you can attend the you can attend the live classes on the Unacademy app, and you can cover all of your syllabus by it. So like a lot of your time gets saved. Also, this is unlimited access to all courses. So once you subscribe for Unacademy, you get unlimited access to all courses. Okay, you also get top educators of India on single platform. Okay, you also get exhaustive coverage of your syllabus. You don't have to read the bulky books. You can just read the study material that is provided by your educators on Unacademy, and only the books that are suggested to you by them. Okay, that will be enough for your preparation for UPSC. You don't have to read each and every bulky book that is being recommended on YouTube or by anyone. Okay, you also get doubt clearing sessions, regular doubt clearing sessions. So even if you don't come up with a doubt while your class is going on, what you can do is you can read that stuff later and then ask your doubts in a separate doubt clearing session. So you will be getting separate doubt clearing sessions on a regular basis. You also get live test series. So the benefit of live test series is that you get a proper atmosphere of a examination hall. Okay, so you can actually predict like what will be the fear, what will be the pressure on you on the in the examination hall. So you can actually work on it, that so that you do not like mark something wrong under any pressure in your examination hall. So it's going to be a good practice for you. Also, you get all of your study material in PDF format, so you don't have to actually worry about कि मेरा internet connection नहीं है, I'm not getting proper signals. You can just download the PDF format of your study material whenever you have a good connectivity, and then you can open it and read it anywhere and anytime you want. Also, you get answer writing sessions. So everyone knows that answer writing plays a major part in UPSC exam. So even if you are not very good at answer writing initially, what you will be getting is that on a regular basis you will be given questions and you have to submit your answers to the educators on Unacademy, and they will then analyze your answer and then give you the feedback about what else do you need to incorporate in your answers to make it better, or like you will be given the tips and tricks about how to write a good answer. So this will be like from the beginning to the end of your course. So at the end of your course, you will be a very good answer writer, that is for sure.
Also, you get mentorship and guidance from the Unacademy. So it's like a one-stop solution for your complete UPSC CSE preparation. You get structured batches with top educators, you get batches in Hindi, English and bilingual, you get late night as well as 2 years batches, you get 100% syllabus coverage, you get also vast range of optionals, you get prelims test series with evaluation, you get mains test series with evaluation, you get dedicated doubt clearing classes, you get daily current affairs practice, you get essay and answer writing practice, and you get performance analysis, you get sectional quizzes, and also you get interview preparations. So here are the information about the recent batches that are going to start on Unacademy. Let me give you a brief about them. So the first one is Mission UPSC CSE 2021. So it's a bilingual GS batch course, okay, and it is starting from 21st of September. Bilingual GS batch course means that you will be taught in both the languages, English and Hindi, and you will be given like notes in the mixed language, like in a language which is very easy to process. So it is going to start on 21st of September. It's a full 1 year batch course. It's a like you get full syllabus coverage with top educators. You get prelims and mains test series with evaluation. You get PDF study material, and you get dedicated doubt clearing sessions in this, and also you get interview preparations in this batch. Next one is Lakshya UPSC CSE 2021. सो ये जो बैच है ये उनके लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं और जो अपना पेपर हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे. सो ये भी 21 सितंबर 2020 से बैच स्टार्ट हो रहा है. ये भी पूरा 1 साल का बैच है, ठीक है. इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. ऊपर से आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी. आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा. आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी इस बैच के अंडर. Next is Expedition UPSC CSE 2021. So this particular batch is for the people who are more comfortable with English language. So everything, each and every class of yours will be in proper English, okay, the strict English language, and each and every note that will be given to you will also be in and only English language. So it is also starting on 21st of September. It is a full year batch course, like for 1 year. You get full syllabus coverage, you get top educators, you get prelims and mains test series with analysis, and you get PDF study material, you get dedicated doubt clearing sessions, as well as you get interview preparations. Now the last one is Expedition UPSC CSE 2022. So this is for the people who are recently in their first, second or third year of college, okay. So this is actually generally for the people who are going to attempt for their UPSC exam in 2022, okay, and the rest 3 batches are for the people who are going to attempt UPSC exam in 2021. So this Expedition UPSC CSE 2022 is starting on 21st of September 2020. It's a 2-year batch course, okay. So you will be given classes for like regular 2 years. You get full syllabus coverage with top educators, you get prelims and mains test series with analysis, you get PDF study material, dedicated doubt clearing sessions, as well as interview preparations. Also here is this Ultimate Revision Booster Prelims batch, which is for free, okay. So the first one is Ultimate Revision Booster. This is in bilingual, okay, so you can enroll it for free. Second one is Ultimate Revision Boosters Prelims 2020, and it is in English language. So you can enroll for both of them for free. You do not have to pay anything for it. So you can enroll it by clicking on the link which we have provided in the description box. Okay, so the duration of these prelims booster revision booster batches is 5th to 30th of September 2020. You get free live classes from Monday to Friday, and also you get sectional quizzes in these batch. Also, you can use our code SIMPLEYT in order to get a 10% discount when you subscribe for Unacademy. So let me tell you how you can get this extra 10% off. So once you click on this get subscription button, then this page will appear, and suppose if you are subscribing for 24 months, then say you have to pay rupees 64,000, and when you apply our code SIMPLEYT here,
then you have to only pay rupees 57,600. But you will only get this discount when you apply this code. I am repeating the code SIMPLAYT. Also, if you have any difficulty in applying this code or any confusion regarding it, you can just contact on a number which I'll be providing in subsequent PPTs. Okay. Also, there is this T20 daily current affairs test series which is for free. It daily helps at 7:30 p.m. There are like 20 questions for 20 minutes. It's of 40 marks, and test analysis is given at the end of every test. So this is for generally, updating your current affairs knowledge on a daily basis. So I hope you can spare like 20 minutes on your current affairs daily. So you can attempt this daily at 7:30 p.m. Also, you can join any of the Unacademy's channel. This one is Unacademy Articulate, or you can join Unacademy UPSC Current Affairs, or Unacademy Lakshya UPSC CSE, or Unacademy Expedition UPSC CSE. Also, you can join Unacademy's Telegram group, which is Unacademy Articulate, or you can also follow them on Facebook. If you use Facebook, the name of the page is UPSC Preparation by Unacademy. You can also join our Telegram group, which is Simple Concepts UPSC. I have provided the link to this group in the description box. You can click on that and join this group directly, or you can just go to the Telegram app and type Simple Concepts UPSC and you will get the group. So the benefits of joining this group is that you get a lot of study material on this group. Also, you get the PPTs that I teach here, okay, on this group. So you don't have to write anything down. You can just open up your app and get these PPTs, and you can just listen to whatever I am teaching here. Also, you can contact or WhatsApp us on this number 9689638048. If you have any confusion regarding how to apply our code, which batch to join on Unacademy, how to get discount, or if you need any personal guidance from us regarding UPSC, or any other doubt regarding UPSC, you can either call us on this number or you can WhatsApp us on this number. I'm repeating the number 9689638048. So with this, let us start with the lesson. So okay, so these are the following list of the jurisdiction and power of Supreme Court. So let's see कि in a brief कि Supreme Court की क्या-क्या jurisdictions हैं और क्या-क्या powers हैं. So जो सबसे पहली jurisdiction या power कह लीजिए Supreme Court के पास है, that is original jurisdiction. एक है writ jurisdiction, then comes appellate jurisdiction, after that comes advisory jurisdiction, and then a court of record, and then power of judicial review and other powers. So we'll be discussing in detail about each and every jurisdiction which is mentioned in this list. So सबसे पहले हम बात करेंगे original jurisdiction के बारे में. So under this original jurisdiction, Supreme Court क्या करता है? Supreme Court generally resolves dispute between the center and one or more स्टेट. सो इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई इशू अराइज होता है या कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर के बीच में या किसी एक स्टेट के बीच में या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, तो उनको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकता है. और क्या क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? अगर सेंटर और एनी स्टेट, ओके, सो लाइक वन साइड इज सेंटर एंड वन स्टेट, or states on one side, okay, and one or more states on another side. तो अगर सेंटर और कुछ स्टेट्स और बाकी के स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो भी उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट. उसको हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको सॉल्व करे. सो फॉर एग्जाम्पल सेंटर है, एक साइड पे सेंटर है और उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, and on the second side is Jharkhand and Karnataka and Andhra. Okay, so अगर इन स्टेट्स के बीच में लाइक एक स्टेट हो गया, एक सेंटर हो गया इधर उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ओके, एंड देन अदर साइड इज ऑन वन और मोर देन वन स्टेट ऑन अनदर साइड. Okay, also Supreme Court has the power to resolve disputes between two or more states. So अगर फॉर एग्जाम्पल राजस्थान और गुजरात के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है या किसी भी दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है,
तो उसको सॉल्व करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और वो पावर कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल होता है? वो फॉल होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर। सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज आई टोल्ड यू कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है, इंडिया में और किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। The dispute that arises must involve a question on which the existence or extent of a legal right depends. So जो dispute इस jurisdiction के अंडर होना चाहिए, जो दो states के बीच में arise हुआ है, it should be a question on which the existence or extent of a legal right depends. Okay, कि या तो किसी एक state का या center का या कुछ states का कोई लीगल राइट जो है वो डिपेंड कर रहा है या वॉयलेट हो रहा है, या देर इज अ क्वेश्चन ऑफ लीगल राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ राइट टू हैव द लैंड. ओके, के झारखंड का जो लैंड है वो कर्नाटका अपने में लेने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स अ मैटर ऑफ लीगल राइट. ओके, सो उस चीज के ऊपर उन दोनों का डिस्प्यूट हो रहा है, सो दिस विल बी रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट. ओके, ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. ठीक है, तो इसमें एक लीगल राइट होना चाहिए, तभी आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. अगर कोई पॉलिटिकल राइट के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमारी ये सीट थी, इसको मिल गई, फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, ये सब चीज़ें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल नहीं होती. एंड इफ़ यू गो टू द कोर्ट सेइंग कि हमारा ये पॉलिटिकल राइट या इसने मेरी सीट ले ली टाइप, ठीक है, ये वाला डिस्प्यूट अराइज हुआ है और हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, नो, सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्रिक्टली डिनाई दैट. इट विल नॉट it will not use its original jurisdiction to resolve this issue, because under original jurisdiction political rights are excluded. I hope original jurisdiction is understood to you. Next comes the writ jurisdiction. So under writ jurisdiction, Supreme Court is empowered to issue writs including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for the enforcement of fundamental rights. So if you see, original jurisdiction में अलग अलग states जो हैं वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास अपने issues resolve करने के लिए. रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर इंडिविजुअल एज इन जो पर्सन है, जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर उनका कोई लीगल राइट या फिर उनका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायोलेट हो रहा है. सो जब भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी इंसान का, तो वो स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अंडर रिट्स. ओके, और कितने टाइप की रिट्स होती है? फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस, second is mandamus, third is prohibition, fourth is quo warranto and the fifth one is certiorari. Okay, I have discussed about each and every writ in my other lecture. You can watch it on this channel. Okay, it is with the name of writs. So a citizen can directly go to Supreme Court, not necessary by way of appeal. Okay, so it is not necessary whenever your fundamental right is violated. सो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. वरना क्या होता है, जनरली जब हमारे लीगल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हम अपील डालते हैं. अगर उसमें हमें वो फेवरेबल डिसीजन नहीं मिला है, फिर हम अपील डालते हैं हाई कोर्ट में. वहाँ से भी अगर हमें फेवरेबल डिसीजन नहीं मिलता है, देन वी कम टू सुप्रीम कोर्ट. But whenever there is a question of fundamental rights, if your fundamental right is getting violated by some act of another person or by the state, then you can directly go to Supreme Court. You don't have to go to any lower court. Along with Supreme Court, all high courts also have power to issue writs for fundamental rights. So as like the original jurisdiction, writ jurisdiction is not exclusive power of Supreme Court. क्योंकि writ jurisdiction जो है वो high courts के पास भी होती है. हर state की जितनी भी high courts हैं इंडिया में, सबके पास ये writ jurisdiction की पावर होती है. That means if your fundamental right is violated, then you can either go to Supreme Court or High Court. Okay, there is no difference between the writ jurisdiction of Supreme Court and that of High Court. Both the jurisdiction of like Supreme Court and the High Court is almost same. However, the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights, but High Court can issue writs also for other purposes. But इसमें क्या है, if you will notice, तो जो High Court के पास writ jurisdiction है, that is wider than
सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन. हाउ? That you can go to Supreme Court under writ jurisdiction only when your fundamental right is violated. But you can actually go to High Court when your any legal right is violated. Okay, अगर आपका कोई legal right violate हो रहा है, for example, अगर आपका right to property जो है वो violate हुआ है, then you cannot go to directly Supreme Court under writ jurisdiction because right to property is not a fundamental right. बट अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वॉलेट हुआ है, देन यू हैव द ऑप्शन टू गो टू हाई कोर्ट अंडर रिट जुरिस्डिक्शन बिकॉज द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट. इट कैन ऑल्सो एंटरटेन the writ jurisdiction for other purposes as in for other legal rights too. Okay, I hope this is understood to you. Next comes the appellate jurisdiction. Okay, so under this jurisdiction, Supreme Court hears appeals against the judgment of lower courts. So अब appellate से आपको पता चल रहा है कि हम अपील डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है. तो आप सुप्रीम कोर्ट में बाय द वे ऑफ अपील भी जा सकते हैं. सो अंडर दिस जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनता है अपील्स को जो कि नीचे वाले कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं. तो अब ये जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है इसको भी कुछ आगे फर्दर हेड्स में क्लासिफाई किया गया है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अंडर ईच हेड के कौन से टाइप के अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है. सो फर्स्ट वन इज अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. So an appeal can be made to Supreme Court against judgment of High Court if High Court certifies that the case involves a substantial question of law. So जो भी अपील है हाई कोर्ट में, ठीक है, और हाई कोर्ट ये बोलता है कि जी ये वाला जो केस है इसमें देयर इज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें एक नया लॉ डिटरमिन करना पड़ेगा. तो अगर हाई कोर्ट ये बोल देता है कि हाँ इसमें एक नया लॉ डिटरमाइन करना पड़ेगा या दिस पर्टिकुलर केस हैज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट, देन सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली हियर इट डायरेक्टली. ओके, इट कैन बी लाइक अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट. Next is appeals in civil matters. So an appeal lies to the Supreme Court from any judgment of a High Court if High Court certifies. तो हाई कोर्ट में अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो उसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है. कब? जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि वो जो केस है दैट केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर जनरल इम्पोर्टेंस, के उसमें जो है कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि सब पब्लिक के लिए एक जनरल इंपॉर्टेंस का मुद्दा बन सकता है आगे जाके. मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी दैट अनदर पर्सन कैन ऑल्सो कम अप विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आधार कार्ड वाला केस लेंगे, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड वॉज मेड मैंडेटरी, ओके, एंड इट केम टू हाई कोर्ट. दैट केस केम टू द हाई कोर्ट कि आप बताइए कि वेदर इट इज़ और नॉट वायलेशन ऑफ आर राइट टू प्रिवेसी. सो अब इसमें क्वेश्चन आया राइट टू प्रिवेसी का. अब राइट टू प्रिवेसी इज वेदर अ फंडामेंटल राइट और नॉट, वेदर इट इज इम्पॉर्टेंट या फिर किसी भी चीज़ तक किसी एक्सटेंट तक पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो हमारा राइट टू प्रिवेसी को वॉयलेट कर सकता है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके, दिस इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. और अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दिस कंटेन्स अ like substantial question of law which is of general importance because आधार कार्ड जो है वो आगे हर किसी को लिंक करना पड़ सकता है, ठीक है. then what it will do, it will transfer that case to Supreme Court or the appeal for that court will lie in Supreme Court. Second condition is when the High Court certifies that the question needs to be decided by Supreme Court. अगर High Court ये बोल देता है कि ये particular case जो है ये हमारे jurisdiction में नहीं है, it has to be decided by Supreme Court, तब भी उस केस की जो अपील है वो Supreme Court में lie करेगी, या मतलब आप उस केस को Supreme Court लेके जा सकते हैं. Next is appeal in criminal matters. Okay, so the Supreme Court hears appeal in criminal proceedings if High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death. So
एक सुप्रीम कोर्ट में उस केस की अपील लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट में एक मर्डर का केस गया, उसमें उसको एक्विट कर दिया गया, उसमें बोल दिया नहीं नहीं इन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेट हिम गो। ओके, उसके बाद जो ऑपोजिट पार्टी थी उन्होंने हाई कोर्ट में वो केस डाला। अब लोअर कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बोला नहीं ये जो है इन्होंने मर्डर किया है, दैट मीन्स ही विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ कि एक्विटल ऑर्डर से, ठीक है, एक्विटल मतलब उसको छोड़ देने के ऑर्डर से हाई कोर्ट ने उसका रिवर्स कर दिया, उसको बोला नहीं अब इसको डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तो वो जो डेथ पनिशमेंट हाई कोर्ट ने अलॉट की है, that will be basically have to be certified by Supreme Court also. Okay, so in this particular case an appeal will lie in Supreme Court. Next is when the High Court has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death. Also जब कोई हाई कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब हाई कोर्ट ने क्या किया, अपने पावर के अंडर लोअर कोर्ट से उठा के उसको केस को हाई कोर्ट में ले लिया सुओ मोटो कि नहीं नहीं वी विल ट्राई दिस केस। ओके, एंड उसमें क्या किया, जो एक्यूज्ड पर्सन था उसको बेसिकली कन्विक्ट कर लिया और उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया कि आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब तक डेथ पनिशमेंट को सर्टिफाई नहीं कर देगा, दैट विल बी नॉट फाइनल। दैट मीन्स इफ इन दिस केस अगर हाई कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट से उठा के कोई केस अपने अंडर ले लिया है और उसमें किसी इंसान को मौत की सज़ा सुना दी है, तो उसकी जो अपील है दैट विल लाई इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो इंसान जिसको सज़ा सुनाई गई है डेथ की, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरे साथ हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा किया तो अब आप मेरी सुनो। दैट मीन्स अपील विल लाई इन सुप्रीम कोर्ट। Third is if High Court certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court. इस केस में भी कि अगर कोई क्रिमिनल केस है और हाई कोर्ट ये बोलता है कि this is a fit case to be solved by Supreme Court, then also an appeal will lie in Supreme Court for such case. I hope this is understood to you. Now comes the appeal by special leave. Okay, so the Supreme Court is authorized to grant special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal. Four aspects of this appeal are it's a discretionary power and not a matter of right. So पहले हम समझते हैं what is this special appeal and what can be done by Supreme Court in this special leave. Okay, so under special leave the Supreme Court is authorized to grant special leave. What is special leave? कि for example आपका किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, किसी हाई कोर्ट में चल रहा है या किसी लोअर कोर्ट में चल रहा है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ओके, कि नो दिस इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस इज टेकिंग अ वेरी मच लॉन्ग टाइम, या फिर कोर्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, या इट इज़ नॉट वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनली, या फिर द प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट बीइंग फॉलोड, मेनी रीजंस। ओके, इफ एनी सच रीजंस अराइजेस then what you can do is you can file a special leave petition in Supreme Court. वो स्पेशल लीव पिटिशन में क्या होता है, जनरली ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ हमारा ऐसा ऐसा केस जो है वो इस लोअर कोर्ट में या इस ट्राइब्यूनल में चल रहा है, ठीक है, या फिर इसमें हमारा कोई जजमेंट पास हुआ है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, इट कैन बी अ हाई कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल, ठीक है, सो हमारा इस कोर्ट में ऐसे ऐसे जजमेंट पास हुआ है and we are not satisfied with it because this was not followed, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप प्लीज़ इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए। सो इफ़ सुप्रीम कोर्ट allows this special leave petition, so what the Supreme Court will do, it can actually take that case and then try it in Supreme Court itself. Okay, but there are like 4 aspects of this appeal, ठीक है। First of all, it is not a discretionary power and not a matter. It is a discretionary power and not a matter of right. You cannot actually ask Supreme Court कि नहीं हमें ये केस Supreme Court में try कराना है, because this is not your right. This is a proper discretionary power of Supreme Court. अगर Supreme Court को लगा कहीं से कहीं तक कि हाँ ये इंसान सही कह रहा है कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है इसके केस में, so what it will do, it will allow your special leave petition and then your case will be appealed in Supreme Court, या आपका वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। It is not a matter of right. You cannot ask Supreme Court to try that particular case as a matter of right because it is nowhere mentioned in your rights.
Next is granted in any judgment, final or interlocutory. So it can, the special leave can be granted in any final judgment, या तो आपका कोई जजमेंट है जो पूरा का पूरा फाइनल हो चुका है किसी हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में, या फिर वो इंटरलॉक्यूटरी है। दैट मीन्स कि जो आपका केस है वो अभी भी चल रहा है और उसमें कुछ ऑर्डर्स आए हैं एंड विथ सम ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका केस चल रहा है और उस केस के चलते हुए बीच में आपको बोल दिया हाई कोर्ट ने कि 10 लाख का फाइन पे करो आप, और केस आगे चलता रहेगा, सजा तो बाद में मिलेगी, अभी के लिए आप 10 लाख का फाइन पे करो। तो दैट इज लाइक एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. So you can also file a special leave petition for that interlocutory order in Supreme Court. It can be related to matter constitutional, civil or criminal etc. ठीक है, जो matter आप special leave में डाल रहे हो, it can be any matter, whether it can be constitutional, it can be civil or it can be criminal. Can be granted against any court. So this is very important कि it can be granted against any court. Special leave आपको किसी भी court के against मिल सकती है. It can be a lower court, it can be a family court, it can be any tribunal, NGT, or it can be any of the high courts. Okay, किसी भी court में अगर आपका कोई case चल रहा है, so you can get the special leave petition. You can actually file your special leave petition in Supreme Court, and if Supreme Court finds reasonable doubts about your case, if he finds कि ठीक है you are being reasonable, then what Supreme Court can do, it can hear your case under special leave. Okay, so I hope this is understood to you. We'll be discussing about the rest of the powers of Supreme Court in the next lecture. Okay, part 2 of this lecture. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.